Hello student. Now we'll discuss the field due to infinity long straight charged wires. एक स्ट्रेट एक्सट्रीमली लॉन्ग चार्ज वायर के केस में उसकी फील्ड जनरेशन कैसे होगा, हम उसको जनरली कूलॉम लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. नाउ लेट अस सी हाउ इट कुड बी इलेक्ट्रिकल फील्ड कुड बी फाइंड आउट फॉर ए लॉन्ग charged wire. Suppose this is a charged wire like this. Suppose you have taken this one is the positive charge, and for a particular point here we need to find the field effect. What is the field effect of here? यहाँ पे कितना field effect है हम इसको find करना चाहेंगे. अब यहाँ पे देखिए as per Coulomb law, number one, this one the continuously distribution of charge on the surface of this electrical wire. So now see, if the distance from this of any point is keep on varying, इधर से कोई distance है, इधर से कोई distance है, this distance is keep on varying, so we cannot predict. And also the charge distribution Q, it is a linear density of charge. We say the total charge is Q for a particular length of L. So linear density of charge is lambda, and Q is not a fixed particular point. कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्यू फिक्स नहीं है. उस केस में तो हम जो इफेक्टिव लिखते थे आपकी फील्ड इफेक्ट निकालने के लिए कूलॉम लॉ से क्या करते थे ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, राइट, एंड दिस इज आर स्क्वायर. सो इस केस में देखिए यहाँ पे एज आर इज वेरिंग, so electrical field also keep on varying E1, E2 and different points. So this rule cannot be applied here to find out the electrical field for this wire on any position. In any position we cannot find out this electrical field. तो इस केस में जो solution है, we have a solution from the Gaussian जो theorem है, Gauss theorem है, उसकी theorem से apply करके we have to find out or derive how the electrical field could be happen like this. So in this wire we have linear density is provided, that is the lambda, we call it the charge per unit length, that is the coulomb per meter. The unit is like this. That means इसके अंदर जो linearly but per meter per meter में क्या Q charge है, that is Q over distributed over L length, वो हमें प्रोवाइड किया गया है. अब देखिए गैस लॉ के अंदर जो पहला एजम्पशन है, वी हैव टू एज्यूम दैट वी हैव ए सिमेट्रिकल सरफेस, क्लोज सरफेस. नाउ सी फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट इफ यू नीड टू फाइंड दिस वन हियर फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वी नीड टू डू, तो इसके चारों तरफ से जो डिस्टेंस है दिस विल कीप ऑन वेरिंग. सो वी नीड टू फाइंड आउट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दिस वन. सपोज इस पॉइंट के ऊपर हम जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लेंगे, लेट्स थिंक एक इसके ऊपर हम एक पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन वायर कंडक्टर, हम उसके ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं चारों तरफ. सपोज व्हाट आई मीन टू से, दिस इज ए कंडक्टिंग वायर, देन वी हैव टू टेक a certain distance. Suppose this distance is r, where we need to find out this one. So this is r, right? So for a certain distance r, we need to check all this point. एक particular चारों तरफ एक line draw करके we can assume one cylindrical surface around this wire. Okay, for Gaussian surface we have to go for the Gaussian surface first to apply the Gaussian law. So हमने इसको चारों तरफ से इस लाइन को अगर r की डायमीटर के हिसाब से चारों तरफ अगर उसको घुमाए, so we'll find out one cylinder. So this is open again. So अगर ये ओपन है तो इसके दोनों साइड में हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं. ठीक है, क्लोज कर दिया. नाउ इट बिकम्स ए गॉसियन सरफेस ऑफ क्लोज surface, and every point this distance is r. From this also r, right? This also r. Now see, now we have हमारे पास
कितने सरफेस हो गया? One surface is this one ring, another surface is 2, this one also ring, then third one is the car surface. अब इसको हम क्लोज पॉइंट के हिसाब से ट्रीट करके गॉस की हमने अप्लाई कर सकते हैं. सो वी हैव नाउ 3 surface, 1, 2, 3. You can write this one, area vector A1, A2, A3 like this. ठीक है, 3 surface है. Now one thing is assumed like this: all the electrical field will be acting radially. One assumption is this: remember, all the electrical field will act radially. अब देखिए इस पर्टिकुलर सिलेंडर के चारों तरफ से, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर हम माने, सो फॉर ए पर्टिकुलर दिस एरिया, स्मॉल एरिया ds, सपोज दिस इज, so vector will be this, perpendicular to this one. This will be the normal 90 degree, and this will be the electrical field over this one. Okay, this is 90 degree and tangential. अब एक छोटा सा एरिया अगर यहाँ लेते हैं इस सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर के सरफेस के ऊपर, hypothetical surface, it will be normal will be like this, and this is the surface 90 degree of this direction like this. And from this side, if we consider this one in a small area, then this will be E like this direction. And for particular area, and here in this surface, this will be E direction will be this, and for this E direction will be this. Now this is the E direction will be this one, and this will be the area vector of 2. area vector की जो direction होगा, we know this is the outward direction and this is the normal, and this is the area vector of surface 1, A1. And for this area vector, this one, if you consider the A3, the small ds, if you consider ds जो होगा, अगर छोटा सा एरिया के ds लेते हैं तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगा, this will be somewhere like this. Now you see the area vector also normal, the area vector पर्टिकुलर सिलेंडर की सरफेस के ऊपर जो इसकी एरिया वेक्टर होगा वो भी उसकी परपेंडिकुलर रेडियली बराबर होगा, वो भी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा. सो दिस इज आल्सो 90 डिग्री. दैट मींस व्हाट, जो ई फील्ड पर्टिकुलर पॉइंट में जो ई फील्ड है, द cos थीटा बिटवीन दिस टू E and A ds, this is actually 0, and here for surface 2 this is E direction and A2 के बीच में जो वेक्टर के बीच में जो एंगल है, this is perpendicular 90 degree. This is 90 degree angle. Theta is 90 degree, and here also theta is perpendicular to each other 90 degree, because area vector this side and this the electrical field is the outward side of this. Okay, now for a Gaussian surface, now we see we got the 3 plane symmetrical plane. We initially imagine the 3 symmetrical plane. 3 symmetrical plane के हिसाब से अब जो total field होगा, we can calculate total field, and from that we can calculate the flux. Now you see, for this one, the electrical field you can see here. So for this E is the field, function of what is this one, or you can say the flux. We know from the flux क्या है ना, electrical field this one for a surface 1, suppose this is a flux 1 for this one, and this is flux 2 for the surface 2, and this is flux 3 for the surface 3. So phi 1 flux 1, this is vector this dot, this is dot product because this is the scalar one, flux is the scalar one, so field vector dot area vector 1 dot, right? And from this the value we can say vector से हम इसको vector को break करें, so this will be E mod of E, then mod of A surface, and this is cos theta, and here theta is 0. So in this case what will happen, this will be E mod, then A1 mod, then this is theta is 90 degree here, this is the 90 degree, so this is cos 90,
So this is cos 90 is 0. So 0 into this, so it is phi 1 is 0. For the surface, so becomes phi 1 is 0 because this is the 90 degree, cos 90 is 0. Similarly, for this one, if you find this one, phi 2, what is phi 2? Phi 2 is nothing but E1, again E, fill E dot of A2 vector, area vector, and this is nothing but the E mod A2 mod. Okay, initially this will be vector only, then mod this, and this is the again cos 90, so this is again it is 0. So phi 2 is also 0. Okay, for cylindrical surface, अब देखिए जो cylindrical third surface रह गया, now phi 1 is 0, phi 2 is also 0. So for cylindrical surface, what will happen now? For cylindrical surface, this is phi 3, this is E. For every point electrical field, because the distance is same, because the distance is same of the cylinder surface, everywhere the distance is same. So for a particular charge Q, we don't know, we'll calculate this one. So for a lambda, this one, everywhere the Q1 charge, the Q charge will be same all over the cylinder, right? So for Q3, this is vector E dot, this is the surface here for a particular, because ये छोटा सा बहुत बड़ा एरिया है, हमने स्मॉल एक एरिया कंसीडर किया. So this is dx vector. If you break this one, so it will be E mod of this one value and dot of ds mod, and this is cos theta, and here theta is 0 everywhere. This is normal, this is also normal to the surface, this is also normal to the surface, so theta in between electrical field and the surface vector is 0. So this will be mod of electrical field and ds mod this one. This is phi 3 for a particular point. Now ये phi 3 जो है टोटल एक छोटा सा एलिमेंट वेक्टर के ऊपर हमने लिया. If you want to calculate this total phi 3, this is a small phi 3, you can say this is d phi 3 for a particular surface के छोटा सा एरिया वेक्टर के ऊपर. If you calculate the total phi 3, so it will be differentiation of all d phi 3. ये इंटीग्रल ऑफ ऑल d phi 3 टोटल सरफेस एरिया के ऊपर. और ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस विल मेक यू इज द इंटीग्रल. It is not a line integral, it is the area integral. So it is a 2 and it is double integral and also closed surface. So you denote like this, closed surface. So d phi 3. So del phi 3 in case of this one, what we will write is E. We can write directly E. This is okay. Vector की मैं खाली magnitude ले लेता हूँ. So this is E and ds integration, closed integration, right? So from this, what is happening actually? And cos theta is 0. So cos theta, cos 0 is 1. So we just convert this is the E ds. ठीक है. अब E ds जो है, अब इसको हमें इंटीग्रेशन करना है. ठीक है. Okay. Now we can say surface integration. We can represent like this is a surface integration. So what we will write is here. So इंटीग्रेशन ऑफ ई ds is nothing. देखिए हर जगह में E is constant. The electrical field because of particular distance, so it is a constant. So we keep it E is the outside and it is the only ds. Only ds integration of total whole cylindrical surface. This is we are converting the phi 3, right? Phi 3 as a whole. अब देखिए जो इंटीग्रल ऑफ ds है, स्मॉल एलिमेंट्स एरिया है फॉर ए सिलिंड्रिकल सरफेस. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस? दिस इज नथिंग बट द E into 2 pi r L, where this is the L length what we have taken. यहाँ पे जो infinity length हमने बोला है, the long state, long is the infinity long is means that this length is much more greater. L is too much greater than the observation point here.
r की मुकाबले में with respect to r, L is too high, so we call it long state or infinitely long charged wire from a particular point, this one to compare, because r is too low list than this L. So this is E 2 pi RL, it is the phi 3, right? Okay. Now total phi electrical field of this Gaussian surface, it is, so total electrical field flux for the Gaussian surface, total flux, if we say this one, so this is phi 1, phi 2, phi 2 and phi 3. Okay, phi 3. So phi 1, phi 2 is 0, only the phi 3 is the value of the flux, and it is nothing but the, what you calculate, E 2 pi R L. सिलेंडर का कार सरफेस का एरिया आप जानते हैं, दिस इज 2 pi R L, 2 pi R, then this is L, so कार सरफेस का एरिया हो गया. So total phi 3 जो है, this is total phi is the pi E 2 pi R L, and from this lambda you see for Gaussian theorem we know the total charge between this L, इस L part की total length जो charge है, you see the total charge of this L length क्या है? Now if you multiply, this is the lambda, so इसके अंदर जो total charge है lambda के अंदर, यानी पाई मीटर इतना है, so Q equal to lambda L, यानी L length के अंदर जो total charge होगा, this will be Q. Okay, Q is the lambda L. And from Gauss theory, we know for a closed surface, the electrical flux phi, what we know, this is actually the Q charge over the epsilon naught electrical constant or permittivity of that media. So from this, Q phi is equal to Q by epsilon naught, right? And Q is, what is this? Q is nothing but the lambda L over epsilon naught. Now you just equate this one to this one to get this total electrical field, right? अब हम क्या करेंगे? Equate these two equations to derive this one. So E 2 pi R L equal to lambda L over epsilon naught. This is equation 1. This was equation 2 from Gauss theorem. ठीक है, ये गॉसियन सरफेस से हमने कैलकुलेट करके ये निकाला है. Now you see this is L both side, you can cut this one, so E will be equal to lambda then epsilon naught, and this will be 2 pi R. This is the relation, and all these are, if it is constant, you see if it is the constant, lambda is constant, so you can say E, this is also constant, epsilon naught is constant, 2 pi also constant. In that case, E will be varies as 1 over R. ठीक है? First, this is the relation. This is the relation. What is this? Now E equal to क्या लिखेंगे हम? Lambda over 2 pi epsilon naught and R. This is the formula. This is the formula. E equal to, this is the relation, and from this relation we see electrical field जो है वो रेडियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है उसकी इनवर्स में उसकी कम होते जा रहा है. यानी उसके अगर ग्राफ पॉइंटिंग करें, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. उसकी ग्राफ जो है वो इस तरह की रहेगा. इफ दिस इज रेडी डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज वायर, और यू कैन से गॉसियन हाइपोथेटिकल सरफेस की सिलेंडर की रेडियस अगर ऐसे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी ग्रेजुअली डिमिनिशिंग लाइक दिस, and it will hypothetically it will be in a particular point it will be goes zero like this. For infinite distance this will be 0. Okay, so
हमने एक गॉसियन सरफेस लेके उसके ऊपर सारे जगह की इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग अलग सिमेट्री के हिसाब से, एक सिमेट्री ये बनाया, एक सिमेट्री बनाया, एंड उसकी जो कार सरफेस है उसकी सिमेट्री बनाया, फिर तीनों को फ्लक्स जोड़ के जो टोटल फ्लक्स है उसकी सारे फ्लक्स हमने जोड़ लिया। और लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज से गॉस की थ्योरम के हिसाब से टोटल चार्ज कितना है ये पर्टिकुलर एल के लेंथ एल लेंथ के अंदर लैम्डा एल, बिकॉज क्यू इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ एल कूलम पर मीटर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो टोटल एल लेंथ के जो सिलेंडर बना है उसके अंदर चार्ज कितना होगा, ना चार्ज होगा क्यू। रिमेंबर वन थिंग अगेन आई एम रिपीटिंग यू, द Q is the charge. Q is actually not a point charge here or here or here. It is distributed total charge again along the length and it is working radially. The electrical field everywhere working radially. This is the assumption. Remember. Otherwise यहाँ के अंदर का अगर चार्ज यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q का Q by L है, यहाँ पे Q by L है, यहाँ पे Q by L है. So this will be again acting like this. So R will be keep on varying. So हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हर जगह रेडियली काम करता है। बेस्ड ऑन दिस assumption we calculate like this. So phi from Gaussian theorem and phi from the calculation of Gaussian surface, then we get this one and we get E equal to lambda by 2 pi epsilon naught R, where we find finally all are constant and the electrical field is keep on varying as the distance goes on inversely. और थोड़ी देर के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा और धीरे 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 स्लो होके नियर टू इन्फिनिटी में जाके उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।